guys and Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. I'm very excited. I hope that you guys like the way our new set looks. Last time we had a few issues with our set, but I'm much happier with this one. हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, पूरी shelf बनवाई है, बहुत सारा decor किया है, and you'll see the guest side of the frame as well, and we've done a lot of work there as well. But anyways, today's guest is very special, and I've been meaning to meet her for a very long time. इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, because she's sometimes not in Islamabad. Actually, most of the time she's not in Islamabad. But this time around when she came, I decided that I have to have my set ready. And I have to have her on the podcast. So today we have with us Ramsha. How are you? Assalamu alaikum. Alhamdulillah. How are you? I'm good. So Ramsha is a content creator, and the interesting thing about her content is her very quick rise into content creation and her very innovative ways that she has done this. If you go onto Instagram, she's everywhere. Ramsha, you are everywhere. Thank you for that. And honestly, I'm very happy with the way you do your content. Like, it's very refreshing. It's very nice to consume. You know, it's huge coming from you because I've been a big fan. I'm not as a fan. So I'm having a fan moment right now. Oh, thank you. Okay, so Ramsha, we're going to go way back into your life and everything, and how you got here to this point and everything that you do. Okay. So, tell us, where were you born? I was born and raised in Lahore. Acha. So Have you always lived there? I've always lived in Lahore. Okay. And where did you get your education, early education, and then later on? I did my O-levels, kindergarten till O-levels from Beacon House, and my A-levels from LGS, and then I went to Canade for my bachelor's. Okay, and kaun se Beacon House mein thi aap? Beacon House, Johar Town campus. Johar Town. JTC. And LGS? LGS, Johar Town. Johar Town. Yeah. Why did you switch? Because by the time we did our O-levels, Beacon House ka standard काफ़ी गिर गया था. down जा रहा था. And since my elder brother, he went to LGS for his A-levels, तो फिर बाबा को था कि हम भी उधर ही जाएं. ठीक है. Me and my elder brother. Okay, and how was your A-levels experience there? It was really good. Okay, why is that? I mean, because the campus was small, and I like small spaces because you get to interact with more people उस तरह से. And all my friends जो Beacon House में थी वो भी मेरे साथ आई थी LGS. तो वो फिर it makes a lot of difference अगर आपका same social circle उसी तरह आगे भी जा रहा है. Although I made new friends वहाँ जाके, and they're still my friends, but I think ये भी अच्छी बात होती है if a lot of your friends don't go with you, because I agree. because फिर बहुत सारे you get to come out of it, right? कुछ लोगों का, and it's always good to meet new people and more people. No, I've been very social all my life. Actually, one of the things I want to talk to you about is, how social you are. So we'll get there as well. Actually, like, एक होता है like you're very, when I see your Ramshanamas and all the content that you do, so there's a lot of friends there. Interaction. Yeah. And you spend a lot of time, going out, being with them, socializing with them. You go to a lot of weddings as well. A lot of weddings. And I think you're also in this age, right? Like, are people around you getting married? Yeah. वो सारा age bracket वही है ना कि सबकी ऐसा शादियाँ हो रही हैं. And my brothers too. तो अभी recently both of my brothers got married. तो इसलिए भी ज़रा ज़्यादा wedding content. So how did you get to be so social? I think I was like that बचपन से. अच्छा. मतलब बचपन से I had a lot of friends. Kindergarten में भी, primary school, middle school. और बस मुझे होता है देख के यार इस लड़की की vibe अच्छी लग रही है. I want to be friends with her. So it's like that. So you approach people, you become friends? Yeah. I don't shy away from कि अच्छा नहीं यार वो खुद आए मेरे पास. लेकिन चलो मैं चली जाती हूँ. So it's like that. Right. So you're confident and you like to. Yeah, I like to meet new people especially. I mean, it's always fun to listen to new stories और मतलब किस किस्म के लोग होते हैं. They're coming from different backgrounds and how they are the way they are. Yeah, I think वैसे भी ना like जितना आप social होते हो और जितना आप लोगों से मिलते हो, it really builds
empathy inside of you, क्योंकि आपको जब when you hear people from different backgrounds and their experiences and their perspectives, तो आपको because of that human connection you are able to humanize more people. कि इस तरह के भी लोग होते हैं, उनके ये thoughts भी होते हैं. I think it generally makes you a more open individual. You know, you're more acceptable. हाँ, इस तरह भी होता है and it's okay. It's okay. Diversity okay. Exactly, diversity. हाँ. Sahi. But you've lived in Lahore all your life, gone to the same school. So how did you get to be so social then? Because school में already इतने सारे sections होते हैं, इतने सारे age brackets होते हैं, तो मैं अपने seniors के साथ भी socialize करती थी, juniors के साथ भी, classmates भी पूरी class friend है, तो बस उस तरह. What's your star sign? Sagittarius. I don't know. Sagittarius. Yeah, Sagittarius. अच्छा. Yeah. सही है. Right. Acha, so we were at your A-levels. Then you went to Canada. Why? I didn't want to, but because वो all girls होता है और family, I belong to a Pathan family. Oh, अच्छा. So, yeah. Yeah. Acha, so they wanted you to go into. Yeah, because my pupos went to Canada और खानदान की और लड़कियाँ Canada जा रही थीं, तो you should also have to go to Canada. Because Canada is for you. And Canada was that one place that I didn't want to go at all. Why? Because I didn't want to. I want to do like fashion marketing वाली चीज़, fashion designing, PIFD जाना था मुझे. BNU तो मुझे पता था कि out of question है for my parents. But PIFD I thought कि वो मान जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने. तो बस. But I also feel like कि Canada का experience has really opened me up. मतलब आपको बहुत, आप जो अपने बबल में होते हो ना, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ के आप बस अपने बबल में हो कि दिस इज़ हाउ लाइफ इज़. लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट. तो वहाँ जाके आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, ऐसे भी लोग रह रहे हैं और इस तरह भी होता है. आई थिंक काफ़ी लोगों का यूनिवर्सिटी में जाके बबल बर्स्ट होता है क्योंकि प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो पहले वाकई अपने एक बबल में रह रहे होते हैं. एंड देन वी गो इनटू यूनिवर्सिटी एंड लाइक, और यूनिवर्सिटीज़ का ये होता है कि स्मॉल टाउन से लोग आते हैं और हर जगह से लोग आ रहे होते हैं, हर बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं. हर बैकग्राउंड से. एक तो आपका बिग सिटी लाइक लाहौर, फिर उसके बाद प्राइवेट स्कूल, तो योर बबल इज़ लाइक रियली स्मॉल. उसके बाद आप एंड A-levels, ठीक है. उसके बाद आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हो, then there's people from FSC and there's people from different schools and then different cities से भी लोग आए हुए होते हैं. सो हाँ, दिमाग तो बहुत खुलता है. बहुत दिमाग मेरा खुला, बहुत ज़्यादा. कनेड से क्या किया आपने? कनेड से मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी किया. अप्लाइड साइकोलॉजी क्यों? बिकॉज साइकोलॉजी मेक्स यू लर्न ह्यूमन बिहेवियर एंड दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग. मैंने अपने A-levels में भी रखा था साइकोलॉजी. तो तब मुझे था कि अगर कुछ ना हुआ और मुझे कनेड जाना पड़ा, क्योंकि एट द बैक ऑफ माई माइंड आई न्यू कि मतलब ये हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो फिर मैं साइकोलॉजी करूँगी. तो लेकिन बहुत मज़ा आया साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, बट आगे उसको मैं परसू करने का इतना सोचती नहीं हूँ. अच्छा. बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू. Content creation. Acha, when did you realize this, that you want to do content creation? 2015. When I was moving from my A-levels to my university wala time. Okay, how did that happen? What was the process? Why did you get into? Why did you want to get into it? तो I've been seeing you since 2012. अच्छा. तो हाँ, उसके अलावा सारे लोग ना मेरे पास आते थे फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर एंड मेकअप की टिप्स वगैरह. आई वाज दैट सेल्फ लर्न वाली चीज़ होती है ना, माई स्किन यूज्ड टू बी अ डिजास्टर. तो वो आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम, ट्रायल एंड एरर, ट्राइंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये काम करता है, ये काम नहीं करता, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. तो लोग मुझसे पूछते थे, तो फ्रेंड सजेस्टेड मी कि तुम क्यों नहीं, लाइक यू व्हाई डोंट यू मेक अ ब्लॉग ना. तो मैं सोचती थी मैं लोगों को बताऊं कि ये करो, अब मेरी कौन सुनेगा. बट देन आई ऑल्सो लाइक आई हैव सीन योर जर्नी स्नैपचैट के टाइम से, तो वेरी ओल्ड. तो आई न्यू हाउ यू ग्रू ना, मतलब माशाल्लाह. तो मुझे था कि अच्छा हाँ, शुरू किया था. शी वाज आल्सो लाइक तो फिर मुझे था कि इस तरह मैं शुरू करूं. तो लेकिन फैमिली प्रेशर्स थे, लाइक आई कुडंट डू दिस बिकॉज पब्लिक अकाउंट लड़की का इज अ बिग नो. बीन देयर डन दैट. तो एंड आई डिडंट इवन डिस्कस इट विद माय फैमिली बिकॉज आई न्यू कि मेरी उनको समझाना, उनको करना बहुत मुश्किल है. एंड दे वांटेड मी टू मैरी अर्ली. तो मुझे पता था कि मतलब आई कैन do this after शादी में भी, बट उसके लिए भी finding the right partner कि अच्छा ठीक है जिसको कोई मसले ना हो इस चीज़. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह for everything that happened and I'm very happy कि I'm here now. तो फिर स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट हुआ 2020. I came back from US. My husband lives in US. तो मैं वापस आई
तब ये कोविड वाला इतना वो नहीं था, मार्च बिल्कुल अर्ली मार्च था। तो माई हस्बैंड वाज लाइक कि तुम बस शुरू कर दो, बिकॉज मैं बस सोचती रहती थी और मैं प्लान करती रहती थी, मेरे पास डायरीज थी फुल ऑफ कंटेंट आइडियाज़, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो वाज लाइक बस तुम शुरू कर दो। आई मेड माई अकाउंट ऑन March 26 आई थिंक 2020, तब तक लॉकडाउन शुरू हो चुका था 15 मार्च से, और बस आई पोस्टेड माई फर्स्ट कॉन्टेंट पीस आई थिंक March 28 को. So you're a lockdown star. Yeah. Ah. And then it started. Then it started. So ये thought 2015 से चल रही थी. 2015 से चल रही थी. 2020 में, लेकिन वो thought उस वक्त आ नहीं सकती थी उस तरह से, because obviously I couldn't do it. Yeah. So it was something you wanted to do, but you were like कि मैं नहीं कर पाऊँगी. अभी नहीं कर पाऊँगी, नहीं मतलब अभी नहीं कर सकती. अभी नहीं कर सकती. हाँ. अच्छा. कर पाऊँगी तो नहीं था, बस कभी अभी नहीं कर सकती. अभी नहीं कर सकती. हाँ. तो और अभी वो समझाना अपने बाबा को, अम्मा तो फिर मतलब समझ जाती शायद. आई डोंट नो उस वक्त उनका क्या वो होता है, मैंने ट्राई भी नहीं किया. लाइक छोड़ दो, थोड़ा सा टाइम है अभी. हाँ. सो शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी मेरी 2018 जुलाई में निकाह हुआ था. और 2019 जनवरी में रुखसती हो गई थी. अच्छा. हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज 21 व्हेन आई गॉट निकाहफाइड and 22 on my रुखसती. अच्छा. तो were you in Canada at the time? Yeah, you were done. No, I was in Canada. I was doing my bachelor's. मेरा ख़त्म नहीं हुआ था. अच्छा. तो लेकिन फिर वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है, बिकॉज माई इमिग्रेशन इज स्टिल इन प्रोसेस एंड माई हस्बैंड लिव्स इन US. और मेरा भी यहाँ पे पढ़ाई चल रही थी, बट आई हैड अ विजिट वीज़ा, तो बैक एंड फोर्थ काफ़ी चलता रहा. हाँ. So you keep going to the US and when he comes here, तो आजकल he is here ना, इसलिए I'm in Islam. How does Islamabad come in the picture? He's from Islamabad? Yeah, he's from Islamabad. My in-laws they live in Islamabad. अच्छा. इसलिए बहुत ज़्यादा लाहौर to Islamabad back and forth होता है. हाँ. So when are you expected to finally move to US? Oh my God, I don't know. And you're probably sick of people asking you this question. Because the wait times are crazy and I'm just waiting for my interview. बाकी सारा process हो चुका है. But जो green card holders हैं उनके लिए थोड़ा process और tough है. Trump था picture में and बस long wait times. तो वो it's still really far away in my head. But depends, क्या पता जल्दी हो. क्या पता. हाँ, कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. True. Okay, back to your content journey. फिर जब आपने शुरू किया 2020 में content डालना शुरू किया, फिर क्या हुआ? Like how was the reaction of the people? How did you feel about creating content? What sort of content were you creating in the start? How did you start? What did you start with? I started with skincare, like with DIYs and basic makeup वाली चीज़ें, like how to do your eyebrows, how to do your blush, your contour, इस तरह की चीज़ों से मैंने start किया. But obviously उस टाइम पे मुझे filming भी इतनी अच्छी नहीं आती थी और एंगल्स भी, और मुझे एडिटिंग में बहुत मसला होता था, बिकॉज मैंने कभी भी नहीं किया था कुछ, कभी भी नहीं किया था. एंड आई एम वेरी बैड एट टेक. ओके. वेरी बैड एट टेक. अच्छा. तो बट वही यूट्यूब किया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकती हूँ मैं, और DIY से बेसिकली स्टार्ट किया था मैंने. और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई केप्ट पोस्टिंग दोज. और फिर साथ साथ मैंने फ़ैशन कंटेंट भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, क्योंकि ईद आ रही थी. आई डिड लाइक स्टाइलिंग वीडियोज़. वो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वो लाइक it's complicated. It's complicated. It's quite hard. Yeah. Fashion influencers deserve way more credit. यार बहुत मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल काम है. देखने में जितना आसान लगता है ना. अब लोग भी ये बोलते हैं ना, उसका क्या काम है, लोग क्लिक करती है यार, जस्ट पोस्ट कर रही है, इससे क्या हो गया, ये तो प्यारी है, इसको तो मिल जाएगा फॉरन फॉलोअर्स मिल जाएंगे. दैट्स नॉट द केस. यू रियली हैव टू स्ट्रगल. इस तरह नहीं होता कि मतलब बस आपकी शक्ल अच्छी है, कुछ भी आप आराम से ऊपर कहीं पहुंच जाएंगे. ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एंड आई ऑल्सो डिडंट वांट टू डू अ 9 to 5 जॉब. तो मुझे था कि एंड आई वांटेड टू अर्न, कि मतलब मेरे पास अपना कुछ हो. हाँ. You wanted to do your own thing and you wanted to make money. Yeah. So and this had been a thing. So it was the perfect thing for you to do. Although इसमें काम ज़रा ज़्यादा करना पड़ता है 9 to 5 से. बहुत ज़्यादा है. It's full time है ना, 24 hours है. बहुत ज़्यादा है. लेकिन बस, और शुरू में था मुझे, मतलब एक आपको होता है ना, बचपन से आपने सुना था लोग क्या कहेंगे. तो वो मुझे उस टाइम पे था कि मेरा इतना बड़ा सोशल सर्कल है, पता नहीं सोचेंगे लोग ये भी, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत था कि इन्फ्लुएंजाज आ गए, टू मेनी इन्फ्लुएंजाज, हर कोई ब्लॉगर बन रहा है. हाँ, टाइम वो वही था कि एकदम से हर कोई बन रहा था. तो मुझे था कि रमशा, अगर तो तुम कहीं ना पहुँची ना तो जस्ट गेट रेडी कि तुम ये सुनोगी. बट आई एटलीस्ट वांटेड टू ट्राई ना, कि मतलब बाद में ये ना हो 5 years डाउन द लेन कि अगर मैं यहाँ ये कर लेती तो आज मैं कहाँ हूँ.
तो वो वाली चीज़ ना, वो what if वाली चीज़, it's very tough to do. Yeah. And I think I can connect on that a lot because मेरा भी यही सीन था, मेरे टाइम पे तो था ही नहीं, this did not exist. So when I did it, तो मुझे भी बस लोग क्या कहेंगे वो जजमेंट वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता था कि अच्छा लोग कहते थे कम कर क्या, what is this? क्या बता रही हो लोगों को? हाँ, what are you doing? Why are you talking to like the camera? Exactly. You know? Because पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं था ना तब. और तब तो बिल्कुल ही odd थी for people के, you know, I think मेरे time पे it was too odd, like, and for your really time it was just like everybody is doing it. और acceptability ज़्यादा है. और तो family की तरफ से it's different because obviously they're still learning. But youth को तो पता है. हाँ, youth But को also in terms of getting projects, I just think about it how it was for you guys. Because तब तो कुछ भी नहीं था ना, influencer marketing wasn't a thing. Yeah, it wasn't. So when I started, I think I did not get my first project until up to I was 50,000 followers stuck. Because there was no such thing. God. You know. Oh my God. So I didn't make money out of this space for a very long time. It was purely out of passion love and for doing it. Yeah, love for doing it. Sharing things with people, you know, things that could help them in one way or another. So money was never the thing, which is why jab a lot of the new influencers came and they were all about PR packages and making money. Free stuff. Yeah, free stuff. Although PR is not free. I know. Exactly. PR is not free. But like, you know, it was just that. And there's nothing wrong. Like, obviously, this is a career. And I'm happy that now people get paid even in like, you know, 9,000-10,000 followers. It's a good thing. Yeah. That is what we have paved. Exactly. So, and that's what we wanted to see. But the thing is that does not mean that content को inauthentic होना चाहिए कि आप for the sake of money ना करो. आप बिल्कुल ही curated है, आपका प्रोफाइल इस तरह का, it's just paid. और वो चीज़ें obviously, लेकिन पता है कंज्यूमर को समझ आ जाती है. हाँ, people can see right through. Exactly. कि मतलब this is something that they don't even use. They're just doing it for the campaign. Yeah. तो वो बात जो है कि I feel like ठीक है, make money from it, but stay true and authentic to your work and your voice and true to your followers and yourself. Yeah, I agree. Like I'm doing this podcast now. There's a मच्छर और मक्खी something. अब जब मैं ये podcast कर रही हूँ तो so far we don't make any money from the podcast. But जाहिर है उसमें time, money, effort. Set सब कुछ लगता है. But I know कि you know this is something that I want to do and eventually it will make money too. Make money too, you know. शुरू में आपको investment करनी पड़ती है. So I felt that, you know, people were just all about, a lot of them were all about that. बीच में भी phase आया था, people are still better. But so हमारे तो बहुत late projects आए थे, to answer your question. In fact, when I started, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे भी होता है, कि this is something that could become my career and today it is my bread and butter. So ये मुझे पैसे भी देंगे. हाँ, that's what happened. I was like, hey, मुझे 2,000 रुपए मिल रहे हैं. ये तो मैं बहुत शौक से करूँगी. And literally it was like 2,000, 3,000 rupees उस time पे. Wow. कि do this और आपको 3,000 रुपए मिल जाएंगे. And I was like, wow. So it's kind of cute now. क्यों I'm earning and this is my career. और फिर obviously one thing led to another and this happened. Okay, back to you. तो so एक आपने interesting बात की कि you have a big social circle and लोग क्या कहेंगे और जो and the funny thing is जो मुझे इसमें अपने टाइम में भी interesting लगी that the judgment came from or expected to come from people you actually know, like from your peers. They were judging you for जबकि दूसरे लोग they're very encouraging. People who don't know you are really supportive of you. कि अच्छा, oh wow, I'm here to cheer you. But people who know you they are less supportive of you. और मुझे इस तरह भी लगता है कि maybe one of the reasons for that is that because they are like you, they are in your circle, तो उनको शायद इस तरह होता है कि you know ये क्या मतलब तो But I was in that phase कि मतलब मुझे था कि मेरा तो बहुत बड़ा social circle है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा support मिलेगा. मतलब in terms of following भी मुझे शुरू में मिला. Like जब when I made my account same I think 2 घंटे या 3 घंटे में I had 300 followers. अच्छा. Because I shared it on my private profile. Okay. So I was very happy. I was like मैं अपना first piece of content लगाऊंगी and like you know future में I'll get support from them. लेकिन वो नहीं हुआ. मतलब even friends closer to me
उसमें से सिर्फ मतलब गिन के 4-5 होंगे स्टिल इंटरेक्ट विद माई कॉन्टेंट, बाकी सब इन पर्सन तो दे रियली अप्रिशिएट यू कि वी लव योर कॉन्टेंट, बट वो कभी उस तरह से नहीं आता, लाइक एंगेजमेंट में नहीं आता, नो कमेंट्स नो शेयरिंग इस तरह वाली चीज़. बट आई वॉज फाइन लेटर. शुरू में मुझे काफ़ी हुआ कि यार रमशा ये क्या बात हुई, ये तुम्हारे दोस्त थे. देन आई वॉज लाइक इट्स ओके, मतलब इट्स ओके, इट्स फाइन, दे आर डूइंग देयर थिंग, यू डू योर थिंग. ठीक है. एंड व्हेन यू स्टार्टेड, तो व्हाट अबाउट योर फैमिली? माई फादर बाय दैट टाइम वॉज लाइक शादी हुई है इसकी. बाय द वे, शादी इज योर टिकट टू फ्रीडम. दैट्स सैड बट इट्स ओके. हमारी सोसाइटी में यही होता है, दैट्स सैड बट इट्स ओके. और अबाउट अम्मा को मैंने सारा प्रोसेस, यू नो, आई रन थ्रू हर सारा प्रोसेस कि किस तरह होता है. अच्छा. और ये लोग हैं, ये कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं. मतलब यू प्रॉपर्ली ऑन बोर्डेड हर. या एंड शी वाज लाइक माय बिगेस्ट चीयर लीडर. आज तक वो मुझे आज कहती थी तुम आज रमशानामा बनाओ ना तुम. स्वीट. तुम्हारे जितना हैपनिंग हो रहा है. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो वो अम्मा तो बहुत ज़्यादा वो ऑन बोर्ड. एंड माई ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर यूज टू टीज मी कि ये बस क्लिक क्लिक करती है, ये क्या कर रही है. तो उस टाइम पे तो मैं कुछ कमा भी नहीं रही थी. आई जस्ट स्टार्टेड आउट. तो मुझे था भाई ये काम होता है. आई यूज्ड टू एक्सप्लेन, लेकिन ऑब्वियसली. और दूसरा वाला भाई ही वाज लाइक फाइन, डू व्हाटएवर. बट नाउ ही इज लाइक अच्छा यार ये तो फिट सीन है. अच्छा, फनी थिंग है पाकिस्तान में ना, अगर आपने आपको अपने किसी भी काम के लिए वैलिडेशन चाहिए तो या आप टीवी पे आ जाओ या टीवी पे आ गई, यूट्यूब, या आपको पैसे मिल जाए. ट्रू. सो पीपल स्टार्ट टेकिंग यू मोर सीरियसली व्हेन दे लाइक अच्छा इससे पैसे भी बन रहे हैं, यू नो. अच्छा फिर तो ये कुछ है, ये कैसे किया फिर. हाँ वो वाली चीज़ आ जाती है. हाँ. एंड आई थिंक लड़कियों का थोड़ा सा ये होता है कि अच्छा इट्स फाइन व्हाटएवर ना भी बने, बट जो लड़के हैं ना उनका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वे दे रियली हैव टू फाइट द सोसाइटी. हमारी फाइट फ़र्क है, बट लड़कों की फ़ाइट उस तरह डिफरेंट है कि वे दे हैव टू रियली प्रूव देमसेल्व्स कि नहीं यार दे कैन डू दिस इज़ माई करियर. बिकॉज उनको फिर जॉब वाली प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है, कमाओ 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 कमाओ, लाइक सस्टेनेबल हो ना. तो जाहिर है दिस इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड. तो सोसाइटी ने सारा प्रेशर डाला भी तो मर्दों. हाँ, फाइनेंस, दे आर सपोज्ड टू रन द हाउस. या तो वो मतलब जबकि अगर हम थोड़ा फ्री हो जाएं कि अच्छा ठीक है आप औरतों को भी फ्रीडम दें टू अर्न, दे कैन फाइनेंशियली अर्न, एंड मैन को ये फ्रीडम मिल जाए, दे कैन डू व्हाट दे फील लाइक डूइंग. टेक द प्रेशर ऑफ बोथ ऑफ देम. दे कैन आल्सो हैव दैट विंडो वेयर दे कैन फिगर आउट कि भाई हम ये करना चाहते हैं. A lot of men don't have the choice. It's like, oh, you know, straight out of college, where's the money? Why aren't you earning yet? So yeah. So उनकी वो है, हमारी है कि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि वो public and safety security and all of that. So yeah, हमारी फील्ड ही कुछ ऐसी है. और सेफ्टी सिक्योरिटी का ज़्यादा होता है क्योंकि सिंस यू आर पोस्टिंग लाइक यू नो अ लॉट अबाउट योर लाइफ, और लोग फिगर आउट समटाइम्स कर लेते हैं कि आप यहाँ से गुजरी थी, ये वो वाली जगह थी. हाँ, दैट्स क्रीपी ना. होता है. हाँ, होता तो है. तो थोड़ा सा वो होता है. फिर जब मुझे कहा था कि भाई तुम अपनी सारी ना लाइक लाइव पोस्टिंग ना किया करो. If you're in a mall or you know हाँ, मैं वैसे वो मैं नहीं, वह भी नहीं करती. मेरा ये होता है कि अच्छा मैं एक दफ़ा जब वहाँ से निकल जाती हूँ फिर मैं पोस्ट करती हूँ. बिकॉज मेरे साथ इस तरह हो चुका है कि ओ हम पास में ही थे या हम करीब ही रहते हैं तो मिलने आ गए, ठीक है, which is sweet in one sense but it can also be very dangerous in another. So मेरे साथ तो अच्छा इंसिडेंट हुआ that somebody came to meet me and say hi, that was very nice, but it also alarmed me in the sense कि यार like if someone doesn't have good intentions तो मतलब potentially dangerous है ये. So फिर मैंने भी क्या कहते हैं रन टाइम पोस्टिंग छोड़ दी. when I am out of that location तो फिर पोस्ट. हाँ, that's smart. हाँ, तो ओवर टाइम आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं कि खैर आई एम स्टिल लर्निंग बिकॉज आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ न्यू बिकॉज आई एम अभी सिर्फ मुझे 2 साल हुए हैं. तो बट या अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कम अ लॉन्ग वे. How many followers do you have now? 94. Yeah, almost 100K and I'm excited. Oh my because I still can't believe it. ये मेरी profile. That's huge. Yeah. Maybe we should take out this episode when you have 100K followers. Oh yeah. Oh yeah. 100K special with Hamna Raza. हाँ. No, but that's so nice to hear. That was अच्छा. अब यही बात है ना. Your growth was really fast. Yeah. What do you think in your opinion? कि क्यों?
It's because of the Ramshanamas, honestly. Okay. Because शुरू में I was recording and posting the Ramshanamas, also known as RAK Daily, जो पुराने followers होंगे उनको पता होगा, on my stories. देखिए वो मैं सारे दिन की मेहनत करके, मैं same day record करके, same day edit करके, रात को post करके सोती थी. और मतलब now that I think of it, मैंने ये 3 महीने straight किया without taking a break, even on Saturdays and Sundays. तो अगर मैंने वो ही काम अपनी feed पे किया होता, तो it would have been really different. तो लेकिन फिर मैं तब US थी, तो I also feel like लोगों को अच्छा लगता है, you know, different lifestyle देखने का. And I was very pampered in Pakistan, तो यहाँ से उठ के वहाँ जाके सारे काम भी धुल रहे हैं, सफाइयाँ भी हो रही हैं. तो इसमें बेसिकली सिर्फ हाउस चोर्स होते थे. मुझे शुरू में होता था कि लोगों को क्या देख के इसमें मिल रहा है, लेकिन फिर मैं खुद भी बहुत शौक से देखती थी अपनी वीडियोस के, दिस इज नाइस. तो उसके बाद पाकिस्तान आई. पाकिस्तान में लाइफ इज़ मोर हैपनिंग, और स्पेशली मेरा वो सोशल लाइफ, मेरा ब्रेक और वेकेशन वाला टाइम था, बिकॉज आई वाज़न्ट डूइंग अ फुल टाइम जॉब कहीं भी, एंड आई हैव नेवर हैड अ फुल टाइम जॉब कभी भी. बट आई रियली वांट टू ट्राई वंस कि किस तरह होता है. तो यहाँ आके भी मैंने रमशानामास बहुत पोस्ट किए. तो आई बेसिकली फील लाइक कि जो रमशानामास है ना, दे रियली टुक ऑफ. फिर मेरी दोस्त की जब शादी हुई, उसके रमशानामास बहुत ज़्यादा वायरल, बहुत ज़्यादा. तो आई थिंक दैट्स व्हेन वो पेस जो थी ना वो बहुत हाइप्ड अप हो गई. अब वो फिर होते भी सारे फंक्शंस के, आउटिंग्स के, ब्राइडल शावर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड पीपल लव टू वॉच शादी कंटेंट. शादी कंटेंट इज लाइक तैयार हो जाओ, अच्छे कपड़े, लहंगा. हाँ, इट्स ट्रू. शादी कंटेंट इज शॉर्ट सक्सेस. शादी आउटफिट में फोटो, शादी आउटफिट में वीडियोस. मतलब इट्स मुझे बड़ा वो, मैंने कहा यार जनरली ना पाकिस्तान में पीपल आर ऑब्सेस्ड विद शादीज. ठीक है. अब वो शादी का कोई भी एस्पेक्ट हो तो वो इट रियली वर्क्स. मेरा जो बिगेस्ट बूस्ट आया था कंटेंट में, वो मेरी शादी पे आया था. बलिया नजीब का सबसे बड़ा बूस्ट आया था शादी पे, रेप का शादी पे. हाँ, सो शादी इज अ वेरी लाइक शादी कर लो सीन ऑन. मतलब बट दिस इज सो अजीब फॉर पीपल हु आर लाइक, यू नो, अभी अपने इनिशियल स्टेजेस में दे डोंट वांट टू शादी, बट बिकॉज वो आपको टेम्पटेशन हो कि यार मैं भी कंटेंट बना रही हूँ, शादी कर लेती हूँ. People like to see the shadi, the wedding itself, and then people love marriages also. कि अच्छा couple things and relationship. Yeah, because ज़्यादातर लोगों ने अपने सराउंडिंग में अच्छी शादियाँ नहीं देखी होती हैं. वो बस बहुत awkward और अजीब सी, वो बस शादियाँ होती हैं क्योंकि बच्चे हैं तो we are living together वाली शादियाँ. तो and I think that's changing and it's good that's changing. It's very refreshing now. कि अच्छा चलो शुक्र है happy couples भी होते हैं, they exist. And marriages can be good. तो अब तो सोशल मीडिया पे काफ़ी नॉर्मलाइज हो गया है. लेकिन फिर बहुत सारे वो भी आते हैं जो कहते हैं नो इट्स टॉक्सिक, असल में इतनी हैप्पी नहीं होती मैरिजेस. although I disagree. We need to get rid of that narrative. ठीक है, लोगों के मसले होते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दोज मैरिजेस आर नॉट हैप्पी. दे आर हैप्पी. एवरी मैरिज हैज़ इट्स इशूज, बट दैट डजंट मेक देम अनहैप्पी मैरिजेस. एंड आई थिंक इट्स गुड, लाइक हैप्पी मैरिजेस शुड बी प्रमोटेड. एंड क्या उसे कहते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप जो होता है ना बिटवीन कपल्स शुड बी. ज़्यादा ना हस्बैंड वाइफ वाली वाइफ. हाँ, वो मेरे पति परवेश में हैं और मैं हूँ उनकी बेगम और आदाब. I agree. Cute. Acha, so on the topic of marriage, how did you meet your husband? Okay, start there. Okay. So my husband is my second cousin. Okay. So we met when we were born. When I was born technically. तो उसके बाद बस I grew up, my parents wanted me to get married जल्दी के मतलब क्योंकि हो जाती हैं, जब मेरी फैमिली में शादियाँ हो जाती हैं 20-21, मतलब 18 के बाद 18 से 22-23 के बीच में आपकी कभी भी शादी हो सकती है. अच्छा, ठीक है. तो वो मतलब I know it's not okay but this is what it is. हर किसी का अपना होता है. हाँ. तो and I think वो आपने बचपन से इतना सुना हुआ होता है ना कि बस शादी होनी है, इसके बाद शादी होनी है. हाँ. तो I was mentally ready to get married and फिर इनका रिश्ता आया और वो रिश्ते का प्रोसेस थोड़ा लंबा था. तो आई थिंक 2 साल.
तो वी टॉक्ड एंड आई एक्सप्लेन टू हिम सारा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, बिकॉज बाय देन आई न्यू कि मुझे ये करना है। और इसमें मुझे पता था फैमिली की तरफ से तो होता है ना वो, आई वॉज दैट गर्ल शादी के बाद करना। हाँ, और शादी के बाद फिर हमारे सोसाइटी में तो ना अब आपका हस्बैंड आपको इजाज़त देगा या नहीं देगा। एंड माय फादर यूज्ड टू से कि भाई पूछ के करना। हाँ, क्यों पूछना भाई क्या होता है? हाँ, मतलब इफ़ ही इज़ नॉट पूछिंग मी एनीथिंग कि मैं पूछना क्या होता है? हाँ, नहीं, आई मीन यू शुड नो योर बाउंड्रीज, लेकिन ये पूछने वाला सिस्टम नहीं भाई, हाँ, समझ नहीं होना चाहिए। हाँ, तो एंड देन वी गॉट आवर रिश्ता डन इन 2016 और 18 में हमारा निकाह हुआ यूएस में ही, थिंकिंग कि मतलब यू नो वीज़ा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा अगर यहाँ निकाह कर लिया तो। बट लॉल didn't work out। हाँ, didn't work out that way। तो बस उसके बाद हमारी मैरिज बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रही है। तो बिफोर शादी भी और आफ्टर शादी भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रहा है। तो बट आई ऑल्सो फील लाइक लॉन्ग डिस्टेंस इज गुड इन अ वे, बिकॉज इट रियली मेक्स यू अप्रिशिएट द अदर पर्सन एंड लिटिल थिंग्स जो आप सोचते भी नहीं हैं कि मतलब यू नो कि मैं ये चीज़ भी मिस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू हाँ बढ़ जाती है, बढ़ जाती है यार नहीं यार ऐसे नहीं। And also I feel like a long distance में because you don't get to do so much together, when you finally get to do it, it's like आपको सफाई करने में मजा आता है। सफाई करने में मजा आता है, ग्रोसरी करने में, अब बस साथ बैठे हुए और अपना अपना काम कर रहे हैं, लाइक यू नो हैविंग समवन अराउंड, इस तरह से। आई थिंक अर्ली मैरिज में वैसे भी होता है, लाइक यू नो छोटी छोटी चीज़ें आपको होता है कि अच्छा हम ग्रोसरी इकट्ठे करते हैं, इट्स लाइक यू नो टाइनी ड्रीम्स एंड स्टफ एंड यू आर जस्ट लाइक you feel like you are building something together. That's such a good feeling. I agree. So how was long distance for you guys generally? I mean it's still going on. Still. It's been very tough, but I'm still grateful because it really shaped us. हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा grateful होते हैं because वो इतना दूर रहे हैं तो वो चीज़ आप ज़्यादा appreciate करते हो कि अच्छा and you make most of the time that you and you're more forgiving. मतलब आई फील लाइक हम साथ रहते होते एक तो मैं इतनी पेशेंट ना होती, आई वॉजेंट पेशेंट बिल्कुल भी। अच्छा, बट लॉन्ग डिस्टेंस रियली टॉट मी यू नो लाइक बी पेशेंट, इट्स ओके, यू विल गेट देयर, हो जाएगा। एंड रियली बिलीविंग इन कि मतलब यू नो अगर हो रहा है तो यू विल गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट। एंड वी डिड अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा शायद इसलिए भी है कि हम बहुत अरसा दूर रहे हैं एंड वी बोथ मैनेज्ड इट वेल। मतलब ऑब्वियसली कोई भी चीज़ वन साइड नहीं होती। आई थिंक रमशा लॉन्ग डिस्टेंस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, नहीं? it does, especially जब you have to give space और मतलब you also have to understand कि अगला बंदा भी किसी चीज़ से गुजर रहा है, it's not just you, you're both in this together। तो वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन I think probably मैं भी इतनी satisfied और इतनी chill इसलिए भी हूँ because we're together अभी। तो I think अगर अभी हसान यहाँ ना होता तो मुझे पता कि no, it is tough. It is tough, yeah, it's tough. How much time do you guys have to spend apart at a stretch normally? Maximum we did is 9 months. That's a lot of time. Yeah, that's a lot of time. Especially जब आपका time difference भी हो, day and night। बहुत ज़्यादा होता है। मेरी routine was like मैं रात को जागती थी, दिन में सोती थी। And now he's here, but he's still working from Pakistan, US time पे। तो अभी भी वो बस रात को routine वही है। हाँ। तो but I feel like आप रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। My father used to say ये रात जागने के लिए नहीं होती, सोने के लिए होती है। तो that's really true। आपकी सुबह एनर्जी डिफरेंट होती है अगर आप रात को सही सोए हुए हो तो ये चीज़ नहीं मानती थी मैं, बट अब यू नो 25 रात की नींद और दिन की नींद में बहुत फर्क होता है। आई नाउ बिलीव इन दैट। पहले तो मैं कहती थी बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें अपने माँ बाप की बातों की समझ आती है। सही कह तो ठीक है लेकिन हम चले। हाँ, एंड ऑब्वियसली एज यू ग्रो आपकी एनर्जी कम भी होती है, देन यू वांट योर रात की नींद, and then you have a baby and then रात की नींद। Oh my God, coming from a sore point। फिर तो नींद बाय बाय। इसलिए कहते हैं बच्चे जल्दी कर लो, एनर्जी ज़्यादा होती है। This is what I hear all the time। कि जल्दी because I remember it was so much easier for me पहले to pull off all nighters, sleepless, you know, थोड़ा सा सोई उठ गई, fresh पूरा दिन भी गुजार लिया ना, ठीक है। अब नहीं होता। और फिर जब बच्चा स्टेज पे जाके होता है, मैं कहते हो यार ये क्यों रो रहा है, मुझे क्यों उठना है। No, I do think कि obviously everybody has their own वो कि when they want to have babies, but I definitely do think that energy is a big thing to consider। कि everything else aside, obviously you have to consider career and all your goals and dreams and everything, but also energy is very important। Also energy is very important because babies take a
lot of energy. Yeah. I have one around, तो मैं देख रही होती हूँ कि भाई अब मैं सोचती हूँ आप किस तरह कर लेती हैं. And especially if you have to, खैर सबका अपना होता है, but when you have to do other things like Yeah, you manage have the work, house, work, yeah. ये वो. Like मुझे ऐसा होता है कि if I didn't have to manage the house, कि मेरे in-laws यहाँ होते हैं हर वक्त, या मेरी अम्मी करीब रहती होती, you know, या मुझे वर्क नहीं करना पड़ता, तो चलो फिर भी, you know, थोड़ा सा वो कुशन हो जाता. but Because babies are like a 24/7 job. yeah, It's not like कि आपने 2 घंटे बस आप फ्री हैं. उस 2 घंटे में भी बच्चा सो रहा है तो you have to do lots of other stuff. हाँ. तो but खैर, working, not working, babies are a full-time job. Yeah. And you have the cutest baby, mashallah. Thank you. Acha. So Ramshanamas really Oh, they blew up. Yeah, they blew up. Yeah. उसके बाद और हुआ भी इस तरह ना कि जब मैं आई तो एक शादी थी, फिर एक और शादी थी, फिर मेरे भाई की शादी थी, तो उसके भी बीच में रमशानामस बनते गए. तो वो और वही बात है, हमारी शादियाँ भी इतनी लंबी होती हैं, देसी शादियाँ. एक इवेंट फिर दूसरा फिर तीसरा. और वलीमे तक आप बिल्कुल होते हो कि यार ये पॉइंटलेस लग रहा है अब. तो और इसी तरह होता है, पता है, मतलब वलीमा रमशानामस जो होते हैं दे डू वेल, बट एज कम्पेयर टू मेहंदी एंड बारात वो बस ठीक होते हैं, क्योंकि वलीमे में इतना कुछ होता भी नहीं है, जस्ट तैयार हो गए बस ठीक है, खाना खाया वापस चले गए. तो लेकिन रमशानामस रियली हेल्प. अच्छा, सो नाउ एट दिस पॉइंट इन योर कंटेंट करियर, अभी तो योर हेयर, राइट, how is it doing? Like, I know that you get the views and the engagement and you have almost 100K followers. How is it doing business as a business wise? Like, do you think you're doing well now at this point? I think I'm doing well. बीच में थोड़ा रफ पैच आया था कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे ये भी होता है कि मैं काम के बारे में ना थोड़ी वो होती हूँ कि मतलब I only get projects जो मुझे पता है कि brands और स्किन केयर ब्रांड्स कि जिनको मैं खुद भी यूज़ करूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी दैट समवन जो people can trust. हाँ, या people can trust, and I don't want to break that at all. तो वो जब आप इतने पिकी हो जाते हो ना, तो समटाइम्स इट्स ऑल्सो हार्ड कि आप हर चीज़ पे काम करो. तो समटाइम्स आपको काम आ रहा होता है, लेकिन वो फिर आपका वो मतलब पैसे नज़र आ रहे होते हैं, बट फिर आगे अपना ईमान भी नज़र आ रहा होता है कि यार आप बिल्कुल नहीं करना चाहिए. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स डूइंग गुड. Okay, so you're building a career in it and you plan to stick to that, right? Yeah. Like when you think about your future, this is it. Okay, so how does that play out in you moving to the US? That's the tricky part. Yeah. अब उसके लिए फॉर नाउ तो मैंने इतना इंस्टाग्राम के लिए नहीं सोचा हुआ, बट आई वांट टू शिफ्ट टू यूट्यूब बिकॉज यूट्यूब इटसेल्फ पेज यू, बट ऑब्वियसली वो बहुत टाइम लेता है. मैं अगर अभी शुरू करूँगी तो एट सर्टन पॉइंट आई विल बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट. तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं अब यूट्यूब शुरू कर दूँ सही से. आई डू हैव अ यूट्यूब चैनल, बट वो मतलब इट्स वेरी इनकन्सिस्टेंट. कभी पोस्ट किया, फिर 2 महीने कुछ नहीं किया. तो आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट विद यूट्यूब. और उसके अलावा कुछ ब्रांड्स दे डू वर्क विद यू, वहाँ पे भी आप अपने पैकेजेस भिजवा सकते हैं. मतलब अपने घर डिलीवर कराते हैं यहाँ पे, एंड देन यू आस्क योर पेरेंट्स और एनीवन हुज अराउंड टू DHL यू या कुछ भी इस तरह से. तो एक ये प्लान है. और उसके अलावा आई डू प्लान कि मैं जब US जाऊँ तो मैं वहाँ काम करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आपको घर भी चलाना है. तो वो आप इस तरह नहीं कर सकते. दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बट कि मतलब आई डू प्लान टू हैव अ गुड जॉब या जो भी जॉब मिलेगी, क्योंकि शुरू में तो जो मिलेगा वो करना है क्योंकि घर चलाना है. तो जब मैं जाऊँगी तो फिर इमिग्रेशन वीज़ा पे जाऊँगी, तो इंशाल्लाह आई डू प्लान टू गेट अ जॉब. लेकिन वो जॉब भी पहले आई वाज थिंकिंग कि मैं कोई सफोरा या मैक शैक के स्टोर पे ना आप कुछ इस तरह का काम कर लूँ, बट नाउ आई थिंक कि आई विल बी डूइंग कोई कंटेंट साइट पे ही काम, ताकि इट हेल्प्स मी ग्रो ना. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट साइट पे काम? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ब्रांड्स होते हैं, देयर आर स्मॉलर ब्रांड्स एंड बिगर ब्रांड्स. स्मॉलर ब्रांड्स का मुझे भी इतना नहीं पता, बट आई एम जस्ट कोटिंग सम बिगर ब्रांड्स. क्या पता मैं वहाँ काम कर लूँ. जैसे टार्ट है, दे हैव इंस्टाग्राम पेज एंड दे हैव अ फुल टीम जो कंटेंट बनाती भी है, पोस्ट भी करती है, वो सारा काम मतलब बैक एंड का काम करते हैं. एंड दे डू हैव इन्फ्लुएंसर्स भी ऑन देयर टीम जो कंटेंट पोस्ट करते हैं उनके पेज से भी और अपने पेज से भी. तो एंड ऑल्सो आई बिलीव कि अब जो ब्रांड है दे वांट डाइवर्सिटी. तो मेरे लिए वो चीज़ शायद कुड बी अ प्लस पॉइंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड अ ब्राउन गर्ल. तो एंड आई ऑलरेडी हैव अ गुड पेज अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई एम समवेयर. तो गुड, आई थिंक दैट्स स्मार्ट. यू शुड बी गोइंग फॉर
social media and digital related jobs. And you know, when you are eventually somewhere, then a good thing would be to add an academic stamp into it, where you do a master's in something that is digital or social media related. That's my plan too. Yeah. So, or matlab, you know, like social media is not just being a content creator. There's a lot of work that goes behind. Content creation is one small part, okay? But there's so many other things. So, you know, even if you are not working out as a content creator over there, scripting hai. There's so much you can do in the background. So that's good. Like, you can identify all the opportunities you have in the social media thing and do that. And YouTube is a great... Yeah, but YouTube is slow. मतलब obviously you have to be very consistent. और YouTube बहुत long format videos हैं. मुझे भी उसकी आदत बिल्कुल नहीं है. तो उसके साथ भी used to होना. I think वो ये कि you will have to sort of rediscover your content, because you know, creating for Insta is completely different from creating for YouTube. I agree. And you know, finding that, and also because Insta is sort of like, it's easier to figure out what to do, because a lot of the similar kind of it's easier to grow. Algorithms are much easier. YouTube pe you really have to figure out and find out your thing, and enough to get people to subscribe and watch your videos over and over. Getting subscribers and like retaining them is hard. It's hard. And I'm sure you know it और better. YouTube का तो ये सीन है कि if you are not consistent, तो आप bye bye. नहीं, I totally. And YouTube videos take a lot of effort. Yeah. तो वो ये है कि वो create करने में इतना effort है, फिर editing and posting. long format तो I have to learn a lot about YouTube now. बस मुझे था कि Instagram पहले I was thinking कि मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूँ, फिर मुझे था मेरी एनर्जी बहुत डाइवर्ट हो जाएगी. तो फिर I was like पहले Instagram कहीं पहुँच जाए and then I'll shift आहिस्ता आहिस्ता, like not shift but also move to YouTube. And you know, there was what I've realized, some people may disagree, लेकिन मैंने YouTube और Insta दोनों पे काम करके ये देखा है कि ना दोनों की ऑडियंसेस फ़र्क हैं. सो लोग ज़्यादातर जो इंस्टा देख रहे हैं ना बैठ के, वो यूट्यूब पे नहीं आते. तो आई थिंक एक रुकी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि जब वो यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं तो कीप ट्राइंग टू पुल देयर इंस्टा ऑडियंस इनटू इट कि मैंने दैट्स नॉट द केस. या यू हैव टू क्रिएट यूट्यूब एंड यू हैव टू गेट द यूट्यूब पीपल टू फाइंड यू एंड डिस्कवर यू. सो कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा हमने क्योंकि इंस्टा पे क्रिएट कर लिया, हमारा नाम बन गया है, तो यहाँ भी कर लेंगे. मुझे लगता था लेकिन ऐसे नहीं होता. यूट्यूब की ऑडियंस बिल्कुल अलग है, उन्होंने जो देखना है वो बिल्कुल अलग है. आपको नए सिरे से एक चीज़ सेट करनी है. यू नो, यू कांट एक्सपेक्ट जो इंस्टा पे आपको देख रहा है वो वहाँ आएगा. आप जितना भी अपना लिंक डाल दो, आएंगे लोग, कुछ आएंगे, बट उस लेवल के नहीं आएंगे. लाइक दे विल बी लाइक ठीक है, दे विल नो यू आर डूइंग समथिंग ऑन यूट्यूब बट दे हैप्पी विद वट एवर यू आर डूइंग ऑन इंस्टा. दे डोंट वांट टू सी दैट. सो I've struggled with it. I'm still struggling with it. I don't have the same thing that I get. Well, I love this podcast. Thank you. And I'm here. Wow. No, like, you know, it's just like growing that number. It's very hard. And again, you have to be very consistent. मेरे लिए तो it was the lack of consistency has been there because of my baby and मेरा podcast and baby एक ही time पे conceive हुआ. So I've had a lot of breaks. You're doing really well. Thank you. I'm so proud of you. But for me right now, honestly, number doesn't matter. वही बात है कि right now for me it's the content that I want to put out, कि क्या conversation है. And eventually people will, hopefully. Yeah, inshallah. But मुझे यही लगता है ना कि consistency is one thing. For me, I feel like because of my baby and everything, I haven't been able to put out the content. Yeah, consistency नहीं. But it's okay. तो I know it's fine, but this is not होता है ना. आपको खुद से होता है ना कि यार मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. So for me, retaining the Insta and building a new YouTube with a baby has been with a new human in my life. And you're building a baby too. Yeah, it's all a lot. Yeah, it's a lot. So YouTube के topic पे it's a whole new thing that you have to build from scratch. मुझे भी बहुत सीखना है YouTube के बारे में, ताकि मैं YouTube पे आहिस्ता आहिस्ता शुरू करूँ कुछ. क्योंकि अभी शुरू करूँगी तो फिर you know कुछ सालों में कहीं पहुँचूँगी. तो वो इस तरह फौरन तो नहीं होता ना. अच्छा चलो जी, YouTube star. And I think YouTube is a great idea for somebody who's moving abroad, especially because आपको वहाँ पर फिर यहाँ पर
आपको वहाँ से पैसे रिसीव करने में भी इज़ अ बिट प्रॉब्लमैटिक. वहाँ पर इफ़ यू आर बेस्ड देयर, सो यू मेक मनी मच मोर ईजिली ऑन यूट्यूब देन यू मेक हेयर इन पाकिस्तान. आई डिडंट नो दैट. हाँ, इट्स मच ईजियर. तो व्हेन यू आर बेस्ड देयर, आपकी लोकेशन वहाँ है, तो इट्स ईजियर. बट इंस्टा से वो प्रॉब्लम ये है, लाइक व्हेन यू मूव फ्रॉम हेयर टू वेरेवर, आपकी ऑडियंस अगर पाकिस्तानी है तो अमेरिकन ब्रांड्स वोंट वांट टू वर्क विद यू बिकॉज देयर लाइक हम वहाँ जब बेच ही नहीं सकते तो हम क्या करें. हाँ, आपके लोग पाकिस्तानी हैं, वो ख़रीदेंगे तो नहीं, तो हम अपना पैसा आप पे क्यों लगाएं ना. तो अनलेस यू हैव लाइक वहाँ पे पाकिस्तानी या देसी लोग, अब वो बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑब्वियसली आपका इतना ज़्यादा काम और इतनी सारी ऑडियंस आपकी है ही बेस्ड इन पाकिस्तान, तो वो फिर बहुत मुश्किल है कि आप मतलब हो सकता है, बट इट अगेन फ्रॉम स्क्रैच आपको बहुत मेहनत करनी है टू गेट दैट ऑडियंस एंड एवरीथिंग. तो आई एम लाइक दैट्स फाइन. और पाकिस्तान आपका किसी का कोई आ जा रहा है या आप आ जा रहे हो, तो मतलब कुछ तो हो ही जाएगा. और ना भी हो तो दिस इज समथिंग दैट आई लव डूइंग. अगर मेरे पास अलग कोई जॉब होगी, आई विल बी मेकिंग मनी उससे, तो दिस इज समथिंग दैट आई आल्सो लव. कीप डूइंग साथ साथ. मतलब I don't want to stop even if I'm not making money. हाँ, this is something you like to do. Yeah, I like to do. पहले भी मुझे याद है, I used to like take pictures हर चीज़ की ना. तो मुझे कुछ लोग कहते थे तुम क्या हर वक्त पिक्चर्स या वीडियोस लेती हो, तुम्हारा फ़ोन फुल नहीं हो जाता. आपको तो क्या है, आपको मेरा फ़ोन मेरी स्पेस. तो बट इट फील्स गुड कि अच्छा अब उन्हीं पिक्चर्स और वीडियोस बना बना के आई एम ऑल्सो लाइक earning something. Okay, and with Instagram, what is your plan? Do you have a plan? नहीं, अब तक तो I was trying to figure out कि मतलब मैं क्या चीज़ पोस्ट करूँ. I think now that one thing Ramshanamas are not going anywhere. क्योंकि वो मुझे खुद भी बनाने का शौक है. People love watching it. तो वो तो it's something that they're here to stay. Yeah, इंशाल्लाह. और उसके अलावा I want to step in फैशन के कंटेंट में लाइक सही से लाइक डू प्रॉपर वीडियोस. अभी तो मैं खुद रिकॉर्ड करती हूँ, एडिट करती हूँ, तो ऑब्वियसली क्वालिटी डिफरेंट होती है. तो नाउ आई वांट टू लाइक step work with people. Yeah, work with people and also work with fashion brands सही से. मतलब क्योंकि ऑब्वियसली आपकी फीड पे प्रॉपर फैशन का काम होगा नहीं, तो आपको फैशन का काम मिलेगा भी. तो आई वांट टू डू प्रॉपर वो वाला उस तरह का काम. लाइक आई एम ट्राइंग टू डू इट. इफ इट डजंट वर्क आउट तो बाकी जो मैं खुद करती हूँ, स्किन केयर का बस मसला ये है, आई रियली वांटेड टू डू स्किन केयर. व्हेन आई स्टार्टेड स्किन केयर वाज माय टॉप. या दैट्स एक बंदे का एक टॉपिक होता है. हाँ, स्किन केयर एंड मेकअप वाज माय थिंग. लेकिन उसमें मसला ये है कि लोगों को ना बिल्कुल बेसिक सेंस नहीं है. और ऑब्वियसली वो फिर आप देना. लेकिन मसला ये है कि वो कॉपी पेस्ट करते हैं स्किन केयर रूटीन्स. और मैं बहुत दफ़ा बताती हूँ कि मतलब दिस इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर मी, बट स्टिल देन आई गेट सम डीएम्स कि मुझे दिस प्रोडक्ट ब्रोक मी आउट. बट वही वाली बात है कि वन प्रोडक्ट फिट्स ऑल नहीं होता. और पाकिस्तान में ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट कि अच्छा ये ब्रांड सही है या इसका. और वही बात है, एक ब्रांड का सारा प्रोडक्ट ठीक होता भी नहीं. बिल्कुल. इतने सारे प्रोडक्ट्स इसीलिए हैं, ईच प्रोडक्ट fits a different person. तो उसमें मुझे थोड़ी वो हो रही है, but I still plan to now put out what I use with the disclaimer कि this is something that works for me. तो you just patch test या आप अपनी skin type देख के करें. हाँ. That is a struggle now, because some things work for you, some things don't work for other people. Yeah, and I think also people need to understand that creators जो हैं वो basically the whole point of being an influencer is showing how you live your life, and then people can pick and choose what they like, and it's their choice. Literally nobody's forcing you. So if you're doing something that you got influenced by from that person and it doesn't work out for you, that's okay, because some things work out for you and some things don't. Yeah. तो उसमें थोड़ा सा वो मुझे होता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है. हाँ, वो मुझे बहुत मुश्किल होता है कि मतलब ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू ट्राई सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स ना, क्योंकि मुझे रिसेंटली बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड्स दे रीचिंग आउट टू मेक ट्राई आवर प्रोडक्ट, एंड आई गो थ्रू द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट सबसे पहले. हाँ, तो वो मुझे मतलब वो थोड़ी सेंस है मुझे, बिकॉज आई हैव बीन रिसर्चिंग अ लॉट ऑन स्किन केयर. अच्छा, नहीं बहुत सालों से, बिकॉज मैंने खुद स्ट्रगल किया, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, इट वर्क जब तक उनकी क्रीम्स लगा रहे हैं आप, फिर वापस आपकी स्किन ख़राब. तो एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नॉर्मलाइज कि इट्स ओके इफ़ यू ब्रेकिंग आउट, इट्स ओके, बिकॉज आई रियली स्ट्रगल्ड उस तरह से. आपकी सेल्फ इमेज बहुत ख़राब हो जाती है कि अच्छा मेरी स्किन पे बहुत दाने हैं या बहुत पोर्स हैं, बहुत ऑयली स्किन है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो वो मुझे होता है वो चीज़ थोड़ी नॉर्मलाइज होनी चाहिए टीन्स में स्पेशली, कि अगर आपकी स्किन
वो पिक्चर परफेक्ट नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप वही देखते हैं ना, क्लीन स्किन्स और कुछ भी नहीं, नो डार्क सर्कल्स, पैरिस फिल्टर. हाँ एग्जैक्टली पैरिस फिल्टर, या तो वो मुझे उससे भी होता है कि भाई, और इफ़ यू गो अप क्लोज तो सबके पोर्स होते हैं. हाँ, तो बस ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे हर चीज़ इतनी फिल्टर लगी हुई आती है कि वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती. तो वंस इन अ वाइल मैं अपनी भी क्लोजअप्स पोस्ट करती हूँ कि मेरे भी पोर्स हैं, एंड इट्स ओके. तो बस मुझे ये भी होता है कि ज़रा ये चीज़ भी इन चेक रहे कि आई एम नॉट यूजिंग टू मैनी फिल्टर्स, और बिल्कुल फेक ना लगूँ मैं. हाँ. जो है वही बाहर भी जाए, मतलब इंस्टाग्राम पे वही जाए जो मैं हूँ. तो मैं पूछती भी रहती हूँ, सुनो जब कोई मुझसे बड़े अरसे बाद मिले, मैं ऐसी लगती हूँ इंस्टाग्राम पे? क्यूट. वो बहुत ज़्यादा फिल्टर ज़्यादा लगता है. हाँ. नहीं नहीं सही है, तुम सही जा रही हो. हाँ. तो मुझे होता है ये चीज़ इन चेक रखनी चाहिए It's एज अ good. क्रिएटर. हाँ, it's good to खुद को accountable रखना and stay in check of what you're doing. Yeah, that's true. That's good. What do you think about the content outside of your own? अगर आप as a viewer मुझे बताएं. What do you think of the content on Instagram these days? How do you feel about it? I mean sometimes I feel like सब एक सा काम कर रहे हैं. हाँ. वो एक सी चीज़ है, वो एक कोई करता है, वो सारी चीज़ें जो है मतलब वो बस कॉपी पेस्ट होता रहता है विद डिफरेंट शक्ल ऑब्वियसली, बट वही सारा सेम काम होता है. बट कुछ लोग हैं जो बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं, एंड देयर लाइक ट्राइंग इनोवेटिव स्टफ. लेकिन वो इनोवेशन वाली चीज़ है वो बहुत कम हो गई है, और ज़्यादातर वही कॉपी पेस्ट होता है कि वो कर रहा है तो वो मैं भी कर रही हूँ. तो वो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है कंटेंट में, कि एक चीज़ शुरू होती है और सब उसको वही करना शुरू हो जाते हैं. पहले Instagram was not a platform like that. It was all about everybody being unique. Yeah, everybody being them. Them. You do you वाली चीज़. Yeah, now it's like जो actually the whole point of being an influencer or a creator was to give value to people. कि आप अपने कंटेंट से लोगों को क्या वैल्यू दे रहे हो, ठीक है. हाँ, और being yourself, right? Like being true to yourself and showing people that कि this is what I do, this is who I am. But अब ये थोड़ा सा कि there is lack of originality and authenticity because everybody's just doing the same thing. It's become more of like a bandwagon trending sort of a thing जो trend कर रहे हो रहा है वो कर लो, जो ट्रेंडिंग हो रहा है. सेम म्यूजिक, सेम तरह का सब एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन, सेम हर चीज़. So I think that the platform, उसका ये फ़ायदा हुआ कि a lot of people started doing it क्योंकि it became easier because you just had to formulas बन गए ना, you just had to ये कर लो set हो, ये कर लो ये कर लो. तो that encouraged a lot of people because suddenly it was like you didn't have to find that unique factor. आपको मतलब obviously सोचने वाली मेहनत कम हो गई. करना तो अभी भी बहुत मेहनत लगती है, चाहे आपने कॉपी भी करना हो बहुत मेहनत लगती है. बट सोचना इज अ ह्यूज टास्क. सोचना एक अलग काम है. आई नो, सोचना बहुत मुश्किल होता है कि क्या करें. एंड आई आल्सो फील लाइक कि अगर आप यू आर कॉपिंग समवन्स कंटेंट या आप इंस्पायर हो रहे हो तो यू शुड गिव देम क्रेडिट. ये बहुत मसला है कि आई नो, आई हैव सीन यू डू दैट, यू गिव क्रेडिट टू पीपल. या बिकॉज ऑब्वियसली अगर मेरी कोई चीज़ इस तरह कर रहा है वो आपको समझ आ जाता है कि यार अगला बंदा क्या कर रहा है, तो यू शुड गिव सम क्रेडिट ना. बेशक आप इंस्पायर्ड बाय लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट क्योंकि वो जिसके साथ हो रहा होता है ना वो दे आर जस्ट लाइक यार ये तो मेरा था, लेकिन अब दे दो ना, क्या जा रहा है. मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है. अच्छा, सो यू यूज्ड टू. हाँ, पहले कभी कभार मुझे ये चीज़ बॉदर करती थी, बट देन आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि यार लाइक आई एम लाइक एन एज ओल्ड इन्फ्लुएंसर नाउ, और मुझे इस तरह की चीज़ें बॉदर करनी नहीं चाहिए टेक्निकली बिकॉज पीपल आर न्यू एंड कमिंग एंड दे आर लर्निंग एंड दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड एंड इट्स फाइन, ठीक है, you're on a different tier. That's not what I'm saying, but I'm just saying कि like you set the path. It shouldn't get under my skin. Like it's fine if people are doing things that are because ये तो फिर हर वक्त ही होता रहेगा ना. You'll always be परेशान के. हाँ, exactly. But that does not mean that people should not give credit. Yeah, they should. Yeah, they should. ज़रूर होना चाहिए because what you're doing is a product of somebody else's brain and they deserve to be credited for it. I totally agree on that. क्योंकि मेहनत लगती है ना सोचना, फिर उस चीज़ को करना और उसको एग्जीक्यूट करना. Because sometimes आप बहुत सोचते हैं लेकिन वो उस तरह से नहीं ऑन वीडियो वो उस तरह नहीं हो पाता. हाँ, तो ये होना ज़रूर चाहिए. हाँ. तो हाँ, you're right, it's become very same. To be honest, मुझसे ना अब बहुत देर इंस्टा पे बैठा नहीं जाता because वो मैं
scroll कर रही होती हूँ ना, it's all too much because it's all same. There's like nothing like refreshing on the feed. So I also feel कि जो बहुत सारे नए क्रिएटर्स हैं ना, मतलब मैं उस टाइम पे थी साथ कि मतलब मेरे साथ भी बहुत सारे और नए क्रिएटर्स थे. आप अपने ढूंढते हैं ना कि मतलब यू नो these are also a few people who started out with you. वो जो वीडियोस और फोटोज़ और कंटेंट अगेंस्ट प्रोडक्ट देना ना, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो सिर्फ चीज़ों के लिए होते हैं कि बस आप हमें कपड़े दे दें या हमें आप वो फलानी चीज़ दे दें, हम आपको वीडियो दे देंगे. उससे जो लोग दे आर देयर टू लाइक यू नो मेक अ करियर आउट ऑफ इट, उनको बहुत मसला है. क्योंकि वो फिर ब्रांड आके कहते हैं कि भाई वो तो कर रहा है, आपको इतना वो क्यों. लाइक अच्छा फिर ठीक है करा लें. तो ऐसा फील लाइक कि ये जो इतना सारा कंटेंट क्रिएटर्स है ना, उनसे ये भी थोड़ा मसला होता है. हाँ, बिकॉज देर बेसिकली वो इंडस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं. बिकॉज टेक्निकली चीज़ें जो कि दूसरे दैट यू शुड बी चार्जिंग फॉर, इफ़ यू आर नॉट चार्जिंग एंड समबडी एल्स इज चार्जिंग, तो वो ख़राब हो रहा है ना, ख़राब हो रहा है, पूल ख़राब हो रहा है. बट ऑल्सो ठीक है, वो कर रहे हैं तो उनसे करा लें, मर्जी तो उनकी है. वो कर रहे हैं तो करें. I just feel like that now creators need to put more thought into the things they're doing. मुझे लग रहा है कि content बहुत ज़्यादा आ रहा है. Like people are creating a lot of content, but it's just coming. असल में मसला ये है कि Instagram जैसे मेरे साथ भी इस तरह होता है कि when I don't post for 2 days or 3 days मेरा ग्राफ नेगेटिव या फ्लैट होना शुरू हो जाता है. And that gives me anxiety कि मतलब you know मतलब मुझे होता है कि काम करते रहो. बर्नआउट भी मुझे हो रहा होता है, तो मुझे होता है कि मतलब अगर मैं काम नहीं करती तो मुझे और एंजाइटी होती है यार ओ माय गॉड मेरा काम. तो उसको बरकरार रखने के लिए भी ये होता है कि आप यू जस्ट पोस्ट लॉट्स ऑफ कंटेंट, रोज लगा रहे हैं, एवरी अदर डे लगा रहे हैं. ऑब्वियसली आप रोज एक नया आइडिया सोच के नहीं एग्जीक्यूट कर सकते. तो वो भी ह्यूमनली आई मीन माइट बी पॉसिबल फॉर समवन, बट फॉर लॉट्स ऑफ पीपल इट्स नॉट पॉसिबल. और वाकई कंटेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है. हाँ, बहुत ज़्यादा. Wow. And like I said, I don't think there's technically anything wrong with that. It's just that people need to put more thought into the content that they're creating. कि थोड़ी originality, थोड़ा खुद सोचें कि you know क्या करें. बिकॉज वो फिर ये होता है कि फिर जाहिर मुझे बस ये है कि फिर लोग भी कहना शुरू हो जाते हैं कि यार ये सारे एक ही तो कर रहे हैं. फैशन इन्फ्लुएंसर्स, ओ क्लिक जो तुम कह रही थी. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ इट्स जस्ट flowing like that and everybody just copying each other, तो people will say कि यार ये किस तरह का काम है, you know, where's the creativity. अब बोर हो जाए ना, मतलब me as a creator obviously I'm a consumer too, मुझसे नहीं देखा जाता बहुत ज़्यादा. मुझे होता है कि अच्छा बस ठीक है हो गया. बल्कि I enjoy stories more because वो बहुत varied होती हैं. वो varied होती हैं because उसमें वो होती है ना जो मैं कह रही थी कि personality आपकी, your you-ness comes out कि this is who you are, जो कि पहले होता था कंटेंट में जो कि अब नहीं होता. हाँ, because everybody's singing the same lyrics to a song and doing the same thing. Viral हो गया. हाँ. And again, there's nothing wrong with that. करें, लेकिन कुछ originality भी हो. हाँ. I think like एक चीज़ होती थी पहले के हर creator की ना, even if they're doing very similar content, आपको पता होता था कि this is their vibe, they're unique, this is the person. अब person नज़र नहीं आता उसके पीछे. I totally agree. हाँ, that's very personality नज़र नहीं आती इस सारे के पीछे. Because वो एक सा frame है ना. सब सेम एक्शंस कर रहे हैं, सेम लिरिक्स हैं, सेम स्टाइल है. बट यू नो द ओल्ड क्रिएटर्स, उनके स्टाइल्स बहुत यूनिक नज़र आते हैं. फॉर एग्जांपल अरूज का बहुत डिस्टिंक्ट स्टाइल है और उसकी हर वीडियो में नज़र आता है कि लाइक यू नो दिस इज हर बिकॉज वो ओल्ड क्रिएटर है, उसने पहले से वो किया है, शी इज एस्टैब्लिश्ड पर्सनैलिटी. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ नॉट के you know, अगर वो exactly वही चीज़ करना भी शुरू कर दे जो बाकी सब कर रहे हैं. The thing is that people who have always followed from her from before, क्योंकि पहले उसकी पर्सनैलिटी इतनी यूनिकली नजर आती, they know her, तो उनको हर चीज़ में उसकी पर्सनैलिटी नजर आएगी बिकॉज दे कनेक्शन है ना. मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना आपके फॉलोअर के साथ कनेक्शन ही नहीं होता क्योंकि आप जानते ही नहीं हो एक दूसरे को. इट्स जस्ट अ वन वे स्ट्रीट. और वो रोज़ बस उस तरह का कंटेंट आ रहा है जो ऑलरेडी वायरल हो रहा है या जो व्हिच इज़ डूइंग गुड. तो वो तो फिर जाहिर है आपकी
यूनेस नहीं नहीं आएगी आ रही. हाँ, पहले people used to connect with creators, their thoughts, what they think, how they are. वो एक influence होता था. अब that's the connection with followers. It's sort of like, because I've been your follower for the longest time, and you know मुझे तो हमना का पता है. I know her because obviously आपने इतना देखा होता है तो आपको पता होता है कि क्या vibe है इस बंदे की. Connection. Yeah. And maybe मेरे लिए it's a big deal, maybe for a lot of people it's not कि क्या ज़रूरत है connection की, but मेरे लिए it's a big deal because for me from the start my audience mattered the most. कि उनका मेरे साथ क्या connection है, trust है, उनको how can I add value to them, to their life. to their life. और मेरा एक piece of content में होता था कि अच्छा इसमें क्या value है, इसमें क्या value है, इसमें क्या value है, you know, for them. अब जो मैं कह रही हूँ कि थॉट के साथ होना चाहिए कि जब आप एक कंटेंट पीस निकालते हो तो आपकी थॉट होनी चाहिए कि यार इससे क्या जा रहा है आगे. whether that's entertainment, that value can also be entertainment. Because entertainment is a thing on its own, which is a really great thing. We all need it. I know. Especially living in Pakistan. So it's important on its own. But you know, is that there? The thing is that if everybody's making the same thing, is entertainment there? I don't know. That is a big question. So with your content, I'm having this conversation with you is कि after a very long time, like when you came up and I saw your content, it was very refreshing. Something personality sparks through. You know, you audience, I feel connected to you, people feel connected to you. I get this a lot, but I don't know मतलब वो किस तरह build हुआ. I don't know this. मतलब I really want to know कि वो किस तरह build हुआ. I get lots of DMs इस तरह के ना कि मतलब आप connection feel होता है, connection feel होता है, हमें लगता है हम आपको जानते हैं, but I don't know कि वो किस तरह हुआ. मतलब I wanted to do that, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं किस तरह करूँ. Because you were yourself. Probably. You were yourself and you created सोच के, thought के साथ, you know, and interacted with people in that way. एक warmth वाली vibe होती है जो कि हर किसी की नहीं हो सकती. That's a plus point as a creator that you have that vibe. So that, which is why there were only very few people in the past who could become creators, because not everybody is able to connect with people. I but agree. now people don't need to connect with people to be creators. Exactly, because उनको वो need feel नहीं होती ना कि ठीक है कॉपी पेस्ट करना है ना, बस करना है, तो क्या जरूरत. ना आपको क्रिएटिविटी चाहिए, ना आपको कनेक्शन चाहिए, आप बस छापे मारते रहें और उसका भी क्रेडिट ना दें और आगे जाते जाएं. So that is why in the past not everybody could be a creator, and now anybody can be a creator. True. So but I still that feel like is the discussion. उनकी ना फिर ग्रोथ डिफरेंट होती है. मतलब जिनका जो बहुत ज़्यादा वही है ना कॉपी पेस्ट सेम कंटेंट चल रहा है, देयर इज़ नो वाइब, देयर इज़ नो पर्सनालिटी कनेक्शन नहीं, उनकी ग्रोथ इज़ डिफरेंट. वो फिर डिफरेंट तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं. ऑब्वियसली देयर ग्रोथ इज स्लो. Not necessarily. Because, you know, if you're doing viral things and trending things, फिर तो आप viral because I've होंगे. seen a lot of people जिनका बस इस चीज़ पे copy paste पे चल रहा है, काम चल रहा है, you know. I feel like and I also feel क्योंकि आपको time चाहिए होता है to connect with people. You have to put in that effort, you know. Conversation two-way होती है ना. It's not just like, you know, you putting your things out there. And I've seen with you, like what you did was that you interacted with everybody on the internet. Like किसी की profile खोलो, your comment was there. So, you know, you make that effort to connect. You make I spend a lot of time on Instagram, like a lot of time on Instagram. It means that you respond to DMs, the questions, the comments, the वो. जो कि at one point I used to do, अब तो मेरी life में मेरे पास time नहीं है, but makes sense. It requires, you know, real connection requires that. effort होती है. मतलब I still try to reply to as many comments as I can. और मैं पुराने posts के भी जाके comment section में I do reply. DMs में भी I still reply, but obviously वो सारे नहीं हो पाते. Obviously. हमें तो लोग complain ही करते रहते हैं कि आपने तो reply करना छोड़ दिया. मैं कैसे बताऊँ, जब से मेरा बच्चा हुआ है, I don't have time for DMs, man. I can't do it. I just can't do it. I don't do it. No, I don't even open my DMs anymore. But that's okay. You're still doing so much. The thing is that, like, for me, वही बात है ना, right now that's not the priority. Yeah, makes sense. You know, I've done that for so many years. My priority is my son, my family, my thing. Obviously. Right now, this is my focus. So, you know, I know that people don't like it, that I don't reply to DMs. But it's okay. But it's fine. Yeah. Acceptance wali baat You hai. also have to, like, you know,
कैरी ऑन विद योर लाइफ, with my the rest of my life as well, like you know. तो और भी चीज़ें हैं ना DMs के अलावा मुझे करनी होती हैं. हाँ, लेकिन that's the thing. मुझे जो चीज़ that I am very happy with, and I would tell any young creators कि now is the time, do everything you possibly can, because obviously the more you grow, the more your responsibilities come on. True, that's very true. I'm not saying कि हो नहीं सकता, हो सकता है, but obviously this is the time to do as much as you can. और पता है DMs का रिप्लाई करते हैं तो उससे आपको भी एज ए क्रिएटर बहुत फ़ायदा होता है आपकी रीच में, बिकॉज पीपल आर एबल टू कनेक्ट ना कि अच्छा ठीक है यार, ही इज़ ऑल्सो जो पीछे है स्क्रीन के, शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड शी इज़ इंटरैक्टिंग विद अस, ठीक है इंसान का बच्चा है. बिकॉज वो बहुत होता है ना कि अच्छा ओ शी समवन बिग तो शी वोंट रिप्लाई, या फिर ओ मतलब यू नो आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी वाइब्स में ये भूल जाते हैं कि अच्छा ये भी इंसान है. ऑब्वियसली मैं भी सबका रिप्लाई. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ह्यूमनाइज योर सेल्फ. आप वो होगा जब आप लोगों से बात करोगे तो आप ह्यूमनाइज करोगे. क्या थॉट आई थी मेरे दिमाग में ह्यूमनाइज करने पे, पता नहीं कुछ थी. इट्स ओके भूल गई. बट हाँ, सो नाउ यू आर वेटिंग फॉर योर immigration visa. Yes. And तब तक यही है. हाँ, and I'm also like you know we're trying for our visit visa कि शायद visit visa मिल जाए, because मेरा बहुत साफ रहा है रिकॉर्ड, लेकिन यू नो US एम्बेसी का कुछ पता नहीं होता कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता. तो we're just hoping for the best. मुझे I also really believe in कि you know गुड सोचो गुड पाओ. हाँ, होता है तो है वैसे. हाँ, ऐसे बहुत फ़र्क पड़ता है. I learned this बहुत पहले कि यू नो आप अच्छा सोचो, मुंह से भी अच्छी बात निकालें. हम मजाक में इतनी स्टूपिड बातें कर देते हैं और वो कभी होती तो लगे ये तो मैंने बोला था. क्यों बोला था, नहीं बोलना चाहिए. हाँ, तो मतलब यू नो बोलना भी नहीं चाहिए. जस्ट लाइक इट्स ओके. तो आप बाहर भी जो निकाल रहे हैं अपने मुंह से अच्छा निकालें. हैव यू एवर थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस? यस. ओके. आई मीन आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट काफ़ी टाइम से, बट आई हैव दैट इन माई माइंड कि अगर मेरा वीज़ा ना आया अभी एनी टाइम सून, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. Okay. So yeah, because I really want to have you know something of my own. Obviously I know बहुत struggle होगी, और मुझे बीच में था कि अगर ना हुआ तो then I saw your positive inspire me only. नहीं, inspire me. तो and I know it you know बंद हो गया वो. तो फिर मुझे you know it also encouraged me कि अगर ना चला तो it's okay. You know at least I tried. तो वो like it really encouraged me, motivated me कि ठीक है रमशा, you think about it, you do it. और अगर तुम्हारा नहीं सक्सेसफुल होता, नहीं चलता, तो at least ट्राई तो किया था ना. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है. द थिंग इज दैट व्हेन इट कम्स टू इंस्पायर मी, सक्सेस की डिफरेंट टाइप होती है. For a pure business sense, it was a very successful business. अभी भी मुझे लोग आके कहते हैं क्यों बंद कर दिया? Because when it comes to money, it was profitable. आज तक कभी लॉस नहीं हुआ, लॉस में नहीं गया मेरा बिजनेस, ठीक है. But there are so many other things जो आपने कंसिडर करनी होती हैं while you're doing a business. Yeah, like ठीक है, even if it's profitable, effort, energy, time, क्या आप क्या आउट देयर दे रहे हो. हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी. खैर वो एक पूरी कॉन्वर्सेशन है जो that's separate कि why I shut it down. But also क्योंकि बिजनेस की बात की, they generally say कि जो आपका फर्स्ट बिजनेस होता है ना, it's mostly never successful. No, it's never the business that you end up doing. Your major life में आपका जो बिजनेस होता है, it's just a start. Yeah, it's a start. It's a stepping stone. मतलब अगर मैं अभी इंस्पायर मी को देखूँ तो the learnings that I have from that business, they're insane. You know, and I know that they're going to take me a very long way. In either a future business or anything that I do in the future. Because बहुत लर्निंग हुई ना, इतना सारा काम किया, इतना साल चला. इट्स नॉट लाइक वो एक साल करके छोड़ दिया. सो मुझे होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना बिजनेस, मैंने स्टार्ट किया इंस्पायर मी को, मैंने कहा यही है, मैं पूरी ज़िंदगी यही करना है, ये मेरी ज़िंदगी. हाँ, लेकिन फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि यार ज़रूरी नहीं है, और ये तो अभी तो मैंने सीखना शुरू किया है, अभी तो मैंने ये भी नहीं किया और ये भी नहीं किया, और वो तो सिर्फ आपको एक स्टेपिंग स्टोन होता है और लर्निंग होती है जिसको फिर आप लेके यू क्रिएट समथिंग बिगर and better. And the main reason for me was कि I felt like I couldn't create something bigger or better unless I let go of the baggage that came with मुझे इसको बंद करना है ताकि मैं कुछ bigger. So that was it was basically a purely practical decision that I had to make कि यार आगे चलने के लिए this is taking too much from me
and the things that I want to do, it's not serving that. So like I said, money is not everything. It's making the money, but it's so much effort that it's taking away a lot from what more I could be doing. मतलब वो भी उस पेस पे itself grow नहीं कर रहा, minus the money, but जो as a business. और मैं आगे भी नहीं कुछ कर पा रही because I'm too stuck with that business. So आपको साथ साथ चीज़ें समझ आती हैं कि अच्छा नहीं यार, like अच्छा पता है, इसीलिए what I really want to do is I want to do a skincare का business. हाँ, makes sense. That's what your passion point is. Yeah, but also एक तो होता है ना clean skincare. Clean skincare के अलावा भी जो हमारी brown skin है ना, it's very different from white skin. Okay. और majorly market में जितने भी products हैं, they are catered to white skin. Right. Even पाकिस्तान में भी बहुत सारे ingredients ऐसे चल रहे हैं which are not good for brown skin, but लोग उसको उस तरह से accept नहीं करते because obviously no one is talking about it. हाँ, because आपके जो skin है उसकी जो क्या आप उससे कैसे उसके जो constituents हैं different है ना आपके, हाँ, they're different. हाँ, तो लेकिन वही बात है कि you know it's skincare का business is really because मतलब you know मुझे होता है कि मैं किसी की I don't want to play with anyone's skin. ये वाला मजाक नहीं है. तो बट वही बात है कि मैं ज़रा बाद में सोचती हूँ कि फर्स्ट आई वांट टू ट्राई द बिजनेस वाली चीज़ कि हाउ इट वर्क्स, यू नो, कि चलता किस तरह है, द लर्निंग कर्व, बिकॉज ऑब्वियसली कभी किया नहीं, आप उठ के एकदम से ऑब्वियसली आप रिसर्च करेंगे, बट स्टिल यू नो डूइंग इट इज़ डिफरेंट देन रिसर्चिंग. एंड स्किन केयर इज़ अ स्लिपरी स्लोप यार. आई नो हाँ, दैट्स टफ. और फिर स्किन केयर की ना वो प्राइसेस ऑब्वियसली अगर आपको इतनी अच्छी कोई ज़बरदस्ती चीज़ बनानी है तो वो उसकी फिर प्राइसेस भी बहुत बढ़ जाती हैं. और वो हमारी आवाम इज़ नॉट रेडी टू स्पेंड 4,000-5,000 ऑन स्किन केयर प्रोडक्ट. लॉन के सूटों पे यस, स्किन केयर नो, मेकअप पे भी, लेकिन स्किन पे नहीं. हालांकि स्किन अच्छी होगी तो मेकअप अच्छा लगेगा. नहीं, लोगों का बिकॉज लोगों का होता है कि या आप अपनी स्किन बहुत अच्छी कर लो या फिर मेकअप से कवर कर लो. आई बिलीव इन स्किन को अच्छा कर लो. हाँ, मतलब मुझे वो होता है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना मैं लोगों को भी मोटिवेट करूँ. अच्छी बात है. हाँ, कि यू नो और ऑल्सो एक्सेप्ट योर स्किन द वे इट इज. ओके, पिगमेंटेशन है और सारा कुछ, तो लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स. चलो, आई थिंक वी हैव टॉक्ड फॉर मोर देन एन आवर. ओह माय गॉड, ओह रियली? यस, पता भी नहीं चला. बहुत टाइम हो गया है. Oh my God, yes. It was good time. Yeah, I had so much fun talking to you. Felt really connected. Same. Yeah. And I still can't believe it. I did this. I'm so happy you came. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. And I'm sure that people are gonna love this podcast and get to know you more. And thank you for having me. It was huge for me, like really huge. It was huge for me that you came to our podcast. You know, हमारे इधर little studio में everybody talks about you and the content you do and appreciates you so much. So I think you visited our studio before as well. I wasn't here उस दिन. Because you were, I think, busy with Rafael. So I wasn't there. I was like, hey, Ramsha आई थी, मुझे पता भी नहीं था. And then you had a picture here. I was like, ये कब हुआ है? मुझे शायद उसी पिक्चर से पता चला कि मैं तो थी भी नहीं मेरे ऑफिस में. ये तो मेरा स्टूडियो में क्यों नहीं मिली? हाँ, but then I found out later that you came over. So anyway, चले फिर देखिएगा ये पॉडकास्ट ज़रूर जी. 100K पे निकालें, फिर 100K पे चले ट्राई करेंगे इंशाल्लाह. Thank you so much. Thank you so much, you guys, for tuning into this episode of Happy Chirp. Actually, episode of Happy Chirp. वो episodes में एक दूसरी वाली होती है. Into this episode of Happy Chirp. बहुत मज़ा आया मुझे. I'm sure you guys enjoyed this conversation as well. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel for more interesting conversations and more interesting people here on this seat. Thank you so much for watching, and Allah Hafiz.